The Global Investor Summit organized by the Madhya Pradesh government to draw investment to the state got underway this morning with Prime Minister Modi attending the inaugural session. Now, apart from drawing investment, what the Madhya Pradesh government has also done is highlighted its key sectors where it's seeking investment and also outlined several policies and unveiled several policies in front of business leaders to draw investment to the state. Now, several top leaders, including the Chief Minister of the state, spoke on what the state intends to do and how it plans to take investment forward. But what we also saw was the attendance of several industry bigwigs and several well-known industry leaders, including Chairman of the Adani Group, Gautam Adani, and also, from the Godrej, group, Nadir Godrej, and several other industry leaders who were here at this event to try and seek and see what avenues are there for investment. And what the Madhya Pradesh government also focused on was convincing industry leaders on where and how and they can invest, and also how the government plans to facilitate that investment in the state of Madhya Pradesh. Now, this is a two-day summit that will see multiple memorandums of understanding being signed, investment proposals being announced, but also what we will see is while Prime Minister Narendra Modi attended the inaugural session, the closing session is expected to be attended by Union Home Minister Amit Shah as well. And that's something that will happen on the concluding day of this summit. So obviously a summit that pitches Madhya Pradesh as a prime investment destination, with the Global Investor Summit kicking off in the state capital of Bhopal. Madhya Pradesh, the heart of India. A land of glorious history, boundless natural beauty and magnificent art. A sanctuary of rich wildlife and diverse traditions. And now, once again, the city of Raja Bhoj is shining on the world map. Under the relentless efforts of Chief Minister Dr. Mohan Yadav's leadership, Madhya Pradesh has transformed into a hub of investment. The state capital, Bhopal, hosted the Global Investor Summit on February 24th and 25th, 2025. The summit was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Who in his speech praised Chief Minister Dr. Mohan Yadav for his dedicated efforts. He emphasized on Madhya Pradesh's immense potential and warmly welcomed investors, inviting them to explore opportunities in the state. विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से
यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। As Prime Minister Narendra Modi addressed the summit, a large number of investors eagerly listened. A competitive enthusiasm to invest in Madhya Pradesh was visible among them. It was the tireless efforts of Chief Minister Dr. Mohan Yadav that drew investors to the land of Raja Bhoj. Apart from those travelling from countries like the UK, Germany and Japan, the Chief Minister personally met with industrialists, extending invitations to them to invest in Madhya Pradesh. Convinced by his vision and leadership, investors from several nations arrived in Bhopal for the Global Investor Summit. Witnessing the overwhelming participation of investors at the event, Chief Minister Dr. Mohan Yadav exuded confidence and welcomed them, assuring that the BJP government would provide full support to their ventures. हाईवे, पर्यटन, पर्यावरण, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक और गुणवत्ता के साथ प्रगति हमने सुनिश्चित की है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकसित और औद्योगिक मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। विचारों से योजना के साकार होने तक, कृषि से सेमीकंडक्टर तक, निर्माण से लेकर निर्यात तक, आईटी से लेकर फिल्म टूरिज्म तक मध्य प्रदेश एक बेहतर भविष्य को आकार दे रहा है। मध्य प्रदेश ने अपनी भौगोलिक स्थिति, संसाधनों और अधोसंरचना के माध्यम से निवेश अनुकूल वातावरण निर्मित किया है, जो देश की प्रगति में भूमिका निभाने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। हमारे मध्य प्रदेश की विशेषता में यह है कि एक बार जो यहाँ आता है, यहीं का आकर रह जाता है। हमारा मध्य प्रदेश ऐसा परिवार है, आप मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश के विकसित करने के संकल्प में सहभागी बने, इसी अपेक्षा के साथ मैं यहाँ हृदय से सभी पधारे हुए सज्जनों का आभार मानता हूं। मैं पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुनः एक नई उड़ान लेने के लिए आगे तत्पर है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबका वंदन, अभिनंदन। The opening session was nothing short of remarkable. Gautam Adani, chairman of the Adani Group, expressed his intent to invest in Madhya Pradesh. This massive investment promises the creation of millions of jobs. Today, I'm proud to announce a new investment of over rupees 1,10,000 crore in the areas of a pump storage, cement, mining, smart meters, and a thermal energy. This multi-sectoral investment will create more than 1,20,000 jobs in Madhya Pradesh by 2030. Besides these investments, I am pleased to state that we are in further discussion with the state government for a greenfield smart city an airport project and a coal gasification project that would involve an additional investment of rupees 1 lakh crore.
One of the biggest challenges for Chief Minister Dr. Mohan Yadav was selecting a location in the bustling capital where global investors could experience peace, fresh air, and natural beauty. That is why he decided to transform the Manav Sangrahalaya in Bhopal into a grand event venue. It was a mission to showcase Madhya Pradesh's strength to the world. The Chief Minister, along with his officials, worked tirelessly, turning the museum into a magnificent temporary city. A vast dome was set up for the main event, along with summit halls, session halls, exclusive country lounges for foreign delegates. A VIP lunch dome, a separate dining area for international representatives, and a luxurious visitor dining lounge. A dedicated media lounge was also created. Every dome was fully air-conditioned and equipped with top-notch amenities. Security was tight and special arrangements were made to ensure the comfort of every guest. Madhya Pradesh's youth stepped forward as volunteers, handling responsibilities efficiently. Investors were not only impressed but deeply satisfied. Several investors openly praised Bhopal and Dr. Mohan Yadav's government. Basically, we are investors. So we are in tech space, composable enterprise, and we want to open up a subsidiary here in Madhya Pradesh. And we also bring Capri-Sun to India. When you came Bhopal, sir? Basically, we arrived 2 days ago. I like Bhopal very much. I was before in Indore already, so I know a little bit about Madhya Pradesh. So you want to describe some difference between Indore and Bhopal, sir? So I think in Indore there is more kind of industrial and also business. So, and what I like are the colors. So compared to Bangalore or Hyderabad, it's much more kind of natural. Let's go like that. Sir, what have you planned and thought for this investor summit or something? So we have 2-3 things we want to basically start on the Indian market. We started already. Just like, sir? So we started 1.5 years ago to get some insights into the Indian market. We visited the hubs in Bangalore, in Hyderabad, we were in Delhi, and we are also part of the very first cohort with Maruti Suzuki. So the very first international cohort, and we expect to kind of develop some good business here. We also have one possible thing we have in mind, in vegan egg. Basically, so which could be very interesting for the market, and that beverage, so a new beverage would also be a very good thing for India. So, and what I also like is basically the vibrant dynamics, so and the diversity also. It's a very good opportunity to meet people, to see what Madhya Pradesh is doing. There are a lot of companies from Switzerland interested to come to India, and it's for me an opportunity to see how it's going. How are you feeling in Madhya Pradesh and Bhopal? What you see and what can you feel? Well, for me it's the first time in Madhya Pradesh and in Bhopal. I have a very good impression so far. भोपाल विश्व पटल पर नजर आ रहा है, इतना बड़ा आयोजन है. आप एक भोपाली होने के नाते, मध्य प्रदेश के वासी होने के नाते, आप इसे कितना बड़ा अचीवमेंट देख रहे हैं, सर? देखिए, ईश्वर की जब कृपा होती है ना, तो सब कुछ अच्छा होने लगता है. हमारे देश पे कृपा हुई, मोदी जी आ गए. हमारे प्रदेश में कृपा हुई, मोहन यादव जी आ गए, जो एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ बहुत तेज़ी से कर रहे हैं. उन्होंने 9 रीजनल समिट कर ली और इतना बड़ा भव्य आयोजन करा, और हर चीज़ें चेंज ला रहे हैं. इंसेंटिव पॉलिसीज़ बना दी है, इजी टू डू बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं. यहाँ पर मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. अब उसको इनकेज का समय आ गया है. It wasn't just international investors. Leading Indian industrialists also lauded Chief Minister Dr. Mohan Yadav and his government's initiatives, expressing a strong desire to invest in Madhya Pradesh. हम लोगों का जो क्षेत्र है
हम आयुर्वेद के क्षेत्र में, जड़ी बूटियों के क्षेत्र में बड़ा काम करेंगे, वेलनेस के क्षेत्र में करेंगे, फूड प्रोसेस के क्षेत्र में पहले से हम उसको हम एक्सपांड करेंगे। निवेश के हिसाब से क्या अनाउंसमेंट्स, क्या ऐलान की हम अपेक्षा रख सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा करेंगे। सर, पीएम साहब ने कहा मध्य प्रदेश में हर पोटेंशियल है, इतना बड़ा आयोजन है, तो आपको ये पोटेंशियल कैसा लग रहा है और आप क्या सौगात देने वाले हैं मध्य प्रदेश को? नहीं, मध्य प्रदेश हरदम से बहुत पोटेंशियल रखते आया है। सबसे स्टेबल समाज अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। पूरा भारत यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पे सब प्रकार का संसाधन, सुविधा, सामग्री है। तो और जो आज सरकार यहाँ पे गत 15 वर्षों से पर्टिकुलरली जब से बीजेपी सरकार आई है, इस प्रदेश का डेवलपमेंट जो उन्होंने किया है, उसके वजह से इसका भविष्य बहुत स्टेबल और बहुत ही उज्जवल होने वाला है। पीएम साहब ने, सीएम साहब ने बहुत सारे एश्योरेंस दिए हैं सर, लेकिन ऐसी कौन सी वो एक दो बातें थी जो आपको इन्वेस्टर, मैन्युफैक्चरर होने के नाते आपको दिल के छू गई? देखिए, ऐसी बात है कि कोई भी इन्वेस्टर स्टेबिलिटी चाहता है, कोई भी इन्वेस्टर गुड गवर्नेंस चाहता है, कोई भी इन्वेस्टर ये चाहता है कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से फले फूले। और मध्य प्रदेश के अंदर जो एक समाज है, उस समाज का उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, पर उनके कहने में इम्प्लिसिट था कि ये समाज यहाँ का बड़ा प्रबुद्ध और एक समझदार समाज है। तो भारत के उन्नति में बहुत बड़ा भाग मध्य प्रदेश का रहेगा आगे चल के। Joining me now, Mr. Nadir Godrej. Sir, the group obviously sees opportunities in India, and as one of India's oldest business houses, how does the Godrej Group view Madhya Pradesh? Yeah. In Madhya Pradesh, our FMCG business had a very large factory in Malanpur for a substantial time. And at the last Madhya Pradesh summit, we had decided to expand that factory, and we got a lot of support from the Madhya Pradesh government. We have invested 450 crore, and later this year the factory will be commissioned, and we are hoping that the Chief Minister will come and inaugurate it. And as this is likely to be very successful, we'll make further investments later. Other businesses like Godrej Properties is doing a development in Indore. Godrej Agrovet is present over here, and Godrej Capital is also expanding to Madhya Pradesh. The two-day Global Investor Summit was so successful that it shattered previous records. On the second and final day, Chief Minister Dr. Mohan Yadav held a press conference to announce the staggering figures. Rupees 30.77 lakh crore worth of investment proposals were received. Hundreds of MOUs were signed, with over 25,000 registrations. More than 200 top company representatives participated. Delegates from 50 countries attended the summit. 9 countries collaborated as partners. Over 5,000 business-to-business meetings took place. More than 600 business-to-government meetings were held. सातों रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिला करके और अभी तक का जो आंकड़ा आया है, हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहाँ एमओयू हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक की हमारी जितनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, उसमें सर्वाधिक आप सबके आशीर्वाद से ये एक अलग प्रकार से मुकाम पे मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। Just as the summit had a grand opening, its conclusion was equally spectacular. The closing ceremony on the second and final day was graced by India's Home and Cooperation Minister, Amit Shah. In his speech, he extended gratitude to all investors and congratulated Chief Minister Dr. Mohan Yadav and his team for organizing such a successful and magnificent event. ये 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समारोह पर मैं डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम, उनका मंत्रिमंडल और मुख्य सचिव से लेकर पूरी प्रशासनिक टीम को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। यहां आने से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी से बात करी। आगे की कार्य योजना के लिए थोड़ा जानकारी भी लिया और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000
10,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। As the second day's events came to an end and the evening set in, Bhopal arose in a new dawn of investment.